Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the latest national updates. At the Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025, Chief Minister Mohan Charan Majhi praised Prime Minister Narendra Modi for his continued support to the state. He highlighted that this was Prime Minister Modi's fifth visit to Odisha in the past 7 months, each visit bringing valuable gifts for the state's development. CM Majhi emphasized that the Prime Minister's recent initiative would bring a monumental transformation to Odisha, with the foundation of Purvodaya laid 7 months ago, now set to strengthen the state's infrastructure and drive its progress in the coming months. ये आपकी 5वां आगमन है। हर बार ओडिशा के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेके आए हैं। इस बार तो आप इतनी बड़ी सौगात लाए हैं कि अगले कुछ महीने में राज्य की विकास की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। 7 महीने पहले पूर्वोदय की जो नींव आपने रखे थे, आज उसी नींव के ऊपर एक मजबूत ढांचा निर्माण होने जा रहा है। इसलिए हम सब आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। सर, your presence on this conclave will instill a sense of confidence among the investors and business community to not only invest in the state but also confidence to stay invested in the long run. Dear guests and delegates, Odisha is not only the land of opportunities, soon it is going to be the driving engine of the country, especially in eastern India, as part of Honorable Minister's vision of Purvodaya. 7 महीने में ये आपकी 5वां आगमन है। हर बार ओडिशा के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेके आए हैं। इस बार तो आप इतनी बड़ी सौगात लाए हैं कि अगले कुछ महीने में राज्य की विकास की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। 7 महीने पहले पूर्वोदय की जो नींव आपने रखे थे, आज उसी नींव के ऊपर एक मजबूत ढांचा निर्माण होने जा रहा है। इसलिए हम सब आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। सर, your presence on this conclave will instill a sense of confidence among the investors and business community to not only invest in the state but also confidence to stay invested in the long run. Dear guests and delegates, Odisha is not only the land of opportunities, soon it is going to be the driving engine of the country. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Desai extended his best wishes to Meenal Chaubey, the Raipur Mayor candidate, and all the councillor candidates from the 70 wards as they filed their nominations. He highlighted Chaubey's extensive experience as the leader of the opposition in the municipality, expressing confidence that her experience would be a valuable asset in the upcoming elections and would definitely benefit her in securing the mayoral position. लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज है और दोनों में चुनाव है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे रायपुर नगर निगम की जो अध्यक्ष की प्रत्याशी है, महापौर की प्रत्याशी हैं श्रीमती मीनल चौबे, वो और पूरे 70 वार्ड के हमारे पार्षद नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और श्रीमती मीनल चौबे लंबे समय से नगर निगम में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी कार्यरत थी। एक लंबा अनुभव है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। भारी मतों से हम लोग रायपुर नगर निगम और बाकी और भी प्रदेश के जो 10 नगर निगम हैं सभी में
भारी सफलता हासिल करेंगे। देखिए, लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज है और दोनों में चुनाव है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे रायपुर नगर निगम की जो अध्यक्ष की प्रत्याशी हैं, महापौर की प्रत्याशी हैं श्रीमती मीनल चौबे, वो और पूरे 70 वार्ड के हमारे पार्षद नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और श्रीमती मीनल चौबे लंबे समय से नगर निगम में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी कार्यरत थी। एक लंबा अनुभव है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। भारी मतों से हम लोग While addressing the 76th Republic Day celebrations in Abu Dhabi, UAE, External Affairs Minister S. Jaishankar reflected on India's remarkable journey over the past 75 years. He highlighted that the country has made significant strides in fulfilling the promises made through its constitution, with aspirations now higher and confidence greater. Dr. Jaishankar pointed out that Prime Minister Narendra Modi has set the national goal of achieving a Viksit Bharat by 2047. Jaishankar further emphasized that the confidence to pursue the vision stems from the achievements of the last decade, particularly in sectors like food, health, manufacturing and energy security. Dr. Jaishankar also lauded the BAP's Hindu Mandir as a symbol of pluralism, harmony and tolerance, underlining India's commitment to these values. In the 75 years that have passed, India has been able to achieve to a considerable measure the promises that we made to ourselves through the Constitution. This envisaged securing justice, liberty, equality and equity to all its citizens. Through that process, the progress and prosperity of our nation was to be advanced even as its unity and integrity further strengthened. All this takes place in a democratic framework which draws on the pluralistic and consultative traditions of our society. Today, we have reached a stage where our aspirations are higher and our confidence greater. Prime Minister Narendra Modi has set out a national goal of achieving Viksit Bharat or developed India by 2047. If we have embarked on that quest with strong conviction, it is because in the last decade, in particular, we have witnessed achievements that tell us what is possible. In the 75 years that have passed, India has been able to achieve to a considerable measure the promises that we made to ourselves through the Constitution. This envisaged securing justice, liberty, equality and equity to all its citizens. Through that process, the progress and prosperity of our nation was to be advanced even as its unity and integrity further strengthened. All this takes place in a democratic framework which draws on the pluralistic and consultative traditions of our society. Today, we have reached a stage where our aspirations are higher and our confidence greater. Prime Minister Narendra Modi has set out a national goal of achieving Viksit Bharat or developed India by 2047. If we have embarked on that quest with strong conviction, it is because in the last decade, in particular, a tragic incident occurred during the Laddu Mahotsav organized by the Jain community in Baraut city, Bagpat, when a watchtower collapsed. Over 20 people were injured in the incident, with 2 to 3 individuals suffering serious injuries and currently undergoing treatment.
Arpit Vijayvargiya, the SP of Bagpat, confirmed that the collapse happened during the celebrations, leaving many participants in distress. Authorities are working to provide medical care to the injured, while an investigation into the cause of the collapse is likely underway. ये आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौद थाना क्षेत्र के सी फील्ड में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम था जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे कुछ लोग मचान पे चढ़े हुए थे। मचान जिस चीज़ का बना हुआ था बल्कि का वो डिस्पैलेज के गिर गए, इस पर जो लोग इस पर खड़े थे वो घायल हो गए। तुरंत मौके पे सभी टीम्स पहुंची थी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, फायर डिपार्टमेंट की भी, और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक की जो सूचना मिली है, लगभग 20 से 25 लोग जो है घायल हुए थे और कुछ लोग सामान्य चोटें थी। सबको फर्स्ट एड दे के उनको घर पहुँचाया गया है। अभी कुछ लोग जो हैं, अभी तक की जो सूचना ही 2-3 लोग जो हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल है, उनका भी उपचार चल रहा है और जो भी स्थिति होती है उसको आप लोगों से शेयर किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। थैंक यू। हादसा कितने लोग घायल? ये आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौद थाना क्षेत्र के सी फील्ड में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम था जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे कुछ लोग मचान पे चढ़े हुए थे। मचान जिस चीज़ का बना हुआ था बल्कि का वो डिस्पैलेज के गिर गए, इस पर जो लोग इस पर खड़े थे वो घायल हो गए। तुरंत मौके पे सभी टीम्स पहुंची थी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, फायर डिपार्टमेंट की भी, और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक की जो सूचना मिली है, लगभग 20 से 25 लोग जो हैं घायल हुए थे और कुछ लोग सामान्य चोटें थी। सबको फर्स्ट एड दे के उनको घर पहुँचाया गया है। अभी कुछ Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma recently addressed a public meeting in the Dwarka Assembly constituency in Delhi. During his speech, he discussed various issues pertinent to the region and emphasized his government's commitment to addressing local concerns. Sharma's address aimed to strengthen political ties in the area and gather support for upcoming initiatives, while also engaging with the community to understand the needs and expectations. The meeting was part of his efforts to maintain a strong presence in Delhi and promote the welfare of residents in the Dwarka constituency. आप सभी मिले, उसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। क्योंकि द्वारका नाम कैसा है? भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, और इस द्वारका में बसे आप सब लोगों के बीच में मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, बड़ी खुशी हुई है। और हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जिस तरह से जो हमको मार्गदर्शन दिया, क्योंकि मैं इसलिए कि मैं ब्रज से आता हूं और द्वारका में आया हूं, तो भगवान कृष्ण के जो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को तो समाज को धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऐसे आदताइयों का अंत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आप सभी मिले, उसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। क्योंकि द्वारका नाम कैसा है? भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, और इस द्वारका में बसे आप सब लोगों के बीच में मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, बड़ी खुशी हुई है। और हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जिस तरह से जो हमको मार्गदर्शन दिया, क्योंकि मैं इसलिए कि मैं ब्रज से आता हूं और द्वारका में आया हूं, तो भगवान कृष्ण के जो उन्होंने कहा है
कि ऐसे लोगों को तो समाज को धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऐसे आदताइयों का अंत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आप सभी मिले, उसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Gujarat CM Bhupendra Patel inaugurated the AS Center of Excellence in Gandhinagar. During the inauguration, Patel highlighted the significance of the center in advancing technology and innovation in the state. He emphasized that the AS Center of Excellence would play a pivotal role in fostering research, development and skill building in artificial intelligence, contributing to the growth of Gujarat's tech industry. Patel also expressed his government's commitment to positioning Gujarat as a leader in technological advancements, providing opportunities for the youth and creating a conducive environment for AI-driven initiatives in various sectors. માતૃભાષા ઉપર અત્યારે સરકાર પણ કે દરેક સબ્જેક્ટ માતૃભાષામાં હોવું જોઈએ એના ઉપર ભાર મૂકીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે કોઈ નહીં, પેલું અમે તો ક્યાંક ને ક્યાંક જતા હોઈએ ત્યારે થોડો લેંગ્વેજનો પ્રોબ્લેમ ફોરેનમાં આવતો હોય, પણ તકલીફ ક્યાંય નથી પડતી. આપણે આપણી ભાષા પકડી રાખીએ તો ક્યાંય તકલીફ પડતી નથી. પણ પેલું જે આપણે ગુજરાતી શબ્દ છે ને, હોશિયારી કરવા ગયા તો પણ વડાપ્રધાન શ્રી હર હંમેશ કહે છે ને કે યહી સમય હે, સહી સમય હે. અહીંયા બેઠેલાને લાગે કે ના, ખરેખર આપણો સમય આવ્યો છે કે આપણે આગળ વધી જ રહ્યા છે. દરેક સેક્ટર, તમે કોઈ સેક્ટર એવું નથી કે જેમાં અત્યારે ભારત પાછળ પડ્યું હોય. ક્યાંય પણ પાછળ હશે તો ફરીથી એમાં પૂરતું ધ્યાન આપી અને બધા દેશની કમ્પેરિઝનમાં લાવી દઈએ છીએ કે આ તો કમ્પેરિઝનમાંથી અત્યારે બીજા દેશ કરતા આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, એવી આપણી અત્યારે તૈયારી છે. એ વડાપ્રધાનશ્રીનું આપણા સૌ માટે એ પ્રેરણાદાયક છે. આપણા માટે એમણે જે રીતે ઇનિશિયેટિવ બધા લીધા છે અને ખૂબ સારું આગળ આપણે વધી પણ રહ્યા છે. વિશ્વ નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આગવા વિઝનથી શરૂ થયેલું ગિફ્ટ સિટી એક્સેલન્સ અને ઇનોવેશન માટેનું દેશનું મોટું હબ બની ગયું. અને માતૃભાષા ઉપર અત્યારે સરકાર પણ કે દરેક સબ્જેક્ટ માતૃભાષામાં હોવું જોઈએ એના ઉપર ભાર મૂકીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે કોઈ નહીં, પેલું અમે તો ક્યાંક ને ક્યાંક જતા હોઈએ ત્યારે થોડો લેંગ્વેજનો પ્રોબ્લેમ ફોરેનમાં આવતો હોય, પણ તકલીફ ક્યાંય નથી પડતી. આપણે આપણી ભાષા પકડી રાખીએ તો ક્યાંય તકલીફ પડતી નથી. પણ પેલું જે આપણે ગુજરાતી શબ્દ છે ને, હોશિયારી કરવા ગયા તો પણ વડાપ્રધાન શ્રી હર હંમેશ કહે છે ને કે યહી સમય હે, સહી સમય હે. અહીંયા બેઠેલાને લાગે કે ના, ખરેખર આપણો સમય આવ્યો છે કે આપણે આગળ વધી જ રહ્યા છે. દરેક સેક્ટર, તમે કોઈ સેક્ટર એવું નથી કે જેમાં અત્યારે ભારત પાછળ પડ્યું હોય. ક્યાંય પણ પાછળ હશે તો ફરીથી એમાં પૂરતું ધ્યાન આપી અને બધા દેશની કમ્પેરિઝનમાં લાવી દઈએ છીએ કે આ તો કમ્પેરિઝનમાંથી અત્યારે બીજા દેશ કરતા આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, એવી આપણી અત્યારે તૈયારી છે. એ વડાપ્રધાનશ્રીનું આપણા સૌ માટે એ પ્રેરણાદાયક છે. આપણા માટે એમણે જે રીતે ઇનિશિયેટિવ બધા લીધા છે અને ખૂબ સારું આગળ આપણે વધી પણ રહ્યા છે. વિશ્વ નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આગવા વિઝનથી શરૂ થયેલું ગિફ્ટ સિટી એક્સેલન્સ અને ઇનોવેશન માટેનું દેશનું મોટું હબ બની ગયું. અને માતૃભાષા ઉપર
અત્યારે સરકાર પણ કે દરેકે દરેક સબ્જેક્ટ માતૃભાષામાં હોવું જોઈએ એના ઉપર ભાર મૂકીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે કોઈ નહીં, પેલું અમે તો ક્યાંક ને ક્યાંક જતા હોઈએ ત્યારે થોડો થોડો લેંગ્વેજનો પ્રોબ્લેમ ફોરેનમાં આવતો હોય, પણ તકલીફ ક્યાંય નથી પડતી. આપણે આપણી ભાષા પકડી રાખીએ તો ક્યાંય તકલીફ પડતી નથી. પણ પેલું જે આપણે ગુજરાતી શબ્દ છે ને, હોશિયારી કરવા ગયા તો પણ વડાપ્રધાન શ્રી હર હંમેશ કહે છે ને કે યહી સમયે BJP MP Sudhanshu Trivedi criticized Arvind Kejriwal for his allegations against the Haryana government regarding the Yamuna River water issue, calling them baseless and highly inappropriate. Trivedi further highlighted that even the Jal Board refuted Kejriwal's claims, terming them false. Trivedi stated that Kejriwal's poisonous statement not only tarnishes the political discourse but also raises concerns among Delhi residents about the depth to which politics has stooped. He further accused Kejriwal and the Aam Aadmi Party of making such cheap-level allegations as part of a conspiracy to divert attention from the failures and to cover up their anticipated defeat, emphasizing that such remarks are detrimental to Delhi's honor. कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया. यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया. और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है. मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है. अब यह दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो अपनी हार को साफ दीवार पर लिखी इबादत करे देखकर विक्षिप्तता में आ गए हैं, या निकृष्टता का प्रतीक है, या निम्नता का प्रतीक है. और अब मैं कह सकता हूं कि जहरीली बानी बोलने वाले केजरीवाल जी की पानी पर दी गई यह बानी निश्चित रूप से दिल्ली के हर व्यक्ति के मन को झकझोर रही है कि राजनीति किस सीमा पर जा रही है, और यह दिल्ली के मान सम्मान का प्रश्न है. Let's take a look at the live of Telangana Chief Minister Revanth Reddy.